water level of Yamuna breached the danger mark of 205.33 meters and has in fact crossed the 207-meter mark at 5 a.m. today. Now, rail and road traffic on the old Yamuna bridge was temporarily suspended yesterday. Thousands of people have been evacuated from the low-lying areas. This development came as more rain was predicted in the city for the entire week after 3 continuous days of torrential downpours, which triggered waterlogging in several areas of Delhi. Now, remember, the Yamuna is threatening to cross its highest flood level of 207.49 meters, which was recorded in 1978. Take a look at some ground reports from Delhi. You see, Yamuna has crossed the danger level mark. In fact, 48 hours have already been passed. In fact, day before yesterday, Yamuna crossed the danger level mark. But as of now, it is flowing above to the 207 mark. Whenever we talk about the flood condition in the national capital, so this whole scene in fact reminds us of the 1978 when the water level was in fact recorded at 207.48. But now I'm showing you the visuals of famous Shani Mandir here in the old Delhi area, where in fact you can see the 2 visuals. First of all, this particular board where we have this Shri Shani Chalisha written, and you can see the visual there, and also this this boy who is standing. In fact, 3 to 4 feet of water. In fact, this water has come inside to this particular temple premise, and also as far as these people are concerned, so they are saying that a number of animals, aquatic animals, are seen in this particular water. आप मुझे बताइए क्या नाम है आपका और अब कब पानी आया इस मंदिर? कृष्णकांत शर्मा नाम है मेरा। अच्छा। और कल रात से पानी आना शुरू हो गया था मंदिर में। कल रात से पानी शुरू हो गया। सांप वगैरह भी आ रहे हैं? सांप वगैरह भी है, जानवर वगैरह भी आ रहे हैं इसमें। अच्छा, तो आप लोगों से बोला गया है यहाँ से चले जाने के लिए या सामान करने के लिए बोला? वाटर लेवल अभी और बढ़ेगा। अच्छा, वाटर लेवल और बढ़ेगा। तो क्या कुछ आप कर रहे हैं? कैसे क्या कुछ सामान यहाँ से पिक कर रहे हो? कहाँ लेके जाएंगे? सामान है मंदिर का, वो सारा यहाँ से मंदिर से बाहर कर रहे हैं। हाँ। हाइट पे कर रहे हैं। हाँ। ताकि वो खराब ना हो। Crossing over to our correspondent Yash Goyal on the story, who's live with us from Delhi. Yash, what is the situation? Yamuna level continues to rise. Well, absolutely, Anjali. The levels are increasing, and I'm coming to you from the Rainy Well area. You can see Yamuna behind me. The kind of water which has actually come to the low-lying areas is very dangerous. Usually the situation over here and the water levels over here are very much normal, but you can see this very structure is almost inching near to the water levels. And in fact, not only this, the traffic on this very belt has also been affected badly. This very area actually joins to the ITO area, and in fact this very bridge leads to ITO, and in fact some traffic snarls are being witnessed here in this very area. Not only that, in fact people who were living in the shanties over here in this very area have now been shifted to these makeshift shelters which have been put up by the authorities over here, because the road on the other side and in fact this bridge and this area is called Rainwell, and this very area is called the Hathi Ghat, which is a very famous ghat here in the national capital. On usual days, there are a lot of people selling plants over here, and in fact there are a lot of people who carry out their daily work. But now you can see how all the people have actually entered their homes which were there down near the bank, and now they have shifted to these shelters. Not only that, personals from Delhi police are here. In fact, personals from civil defense are here to help these people. So right now the conditions of these people is very saddening right now, because they have to shift their entire homes to these very makeshift shelters which have been put up by the authorities over here. You can see the kind of devastation which has been caused by the rising levels of water. And also what you have to also understand is that the IMD has said that more and more rains could happen in the coming days, and in fact if the rains increases in the upper catchment area, the further water levels will increase in the national capital. Right now the marks have already breached the danger zone, and now the water is flowing above the danger mark. And in fact I have a civil defense personnel who has made this arrangements. Sir, पहले आपका नाम बताइए और क्या-क्या अरेंजमेंट्स आपके द्वारा बनाए गए हैं यहाँ पे अभी? मैं सूर्य प्रताप सिंह,
डिवीज़न 200 और डीएम साहब बिहार की तरफ से हमारी तरफ को अरेंजमेंट जो दिए जा रहे हैं वो हमने शेल्टर्स इनको प्रोवाइड करा दिए पूरे पर्सन को, और फ्लड एरिया के अंदर जाने से हमने इनको रोकना है। प्लस साथ में इनके लिए कोई भी एक्स्ट्रा मेडिसिन जो भी कोई भी इमरजेंसी आ जाती है तो उसके लिए हम उनको टेक केयर करते हैं। प्लस इनकी फूडिंग का पूरा ध्यान रखा जाता है और टाइमली इनको फूड प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, और कोई भी मिसहैपनिंग ना हो उसके लिए हम हमेशा अलर्ट मोड पे रहते हैं। तो इसके अलावा और क्या क्या अरेंजमेंट्स किए? खाने का अरेंजमेंट इन लोगों के लिए क्या क्या अरेंजमेंट है? फूडिंग है, मेडिसिन हैं और एक अलर्टनेस है कि किसी को कोई इमरजेंसी हो तो उसके लिए हम फीडबैक पूरी टीम हमारी तैयार करते हैं। तो मैं जो ये वाटर लेवल्स कल हम लोग यहाँ पे आए थे इतना ज्यादा नहीं था, तो अचानक से ही कल मतलब 12 से 13 घंटे में पानी इतना ज्यादा उफान पाया है, तो तकरीबन कुछ आपके पास नंबर होगा कि कितने फैमिलीज आपने शिफ्ट करके शेल्टर्स में लाए हैं? एक्चुअली के अंदर ऐसा है कि अनकाउंटेबल पर्सन्स होते हैं, काफ़ी सारे एरिया से काफ़ी लोग मूव होते हैं, पर लेकिन ये है कि टाइम टू टाइम की लिस्ट तैयार होती रहती है, क्योंकि जो भी वहाँ पर इनका रिकॉर्ड होता है उसके हिसाब से हम इनके लिए पूरा अरेंजमेंट तैयार करते हैं, पूरा फीडबैक तैयार होता है। पीछे से हथनीकुंड बैराज से जैसे पानी छोड़ा गया है पीछे से, और डे बाय डे जितना आएगा वो तो इम्पैक्ट उसका यहाँ पे वाटर लेवल में हमें देखने को मिलेगा ही, पर जब तक नेचुरल सब कुछ चीज़ें इजी नहीं हो जाती हैं, हमारी फीडबैक टीम ऐसे वर्क करती है। तो ऐसी कितनी टीम्स आपकी अभी यहाँ पे लगी है? मैं आपको देख रहा हूँ दिल्ली पुलिस के भी साथी आपके साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो कितने लोग इस जगह में अभी पर्टिकुलर काम कर रहे हैं? अभी एक शिफ्ट के अंदर हमारे कम से कम भी 10 to 12 वॉलंटियर्स रहते हैं जो अपना देते रहते हैं अपनी टाइम टू टाइम अपनी जो सर्विसेज हमने देनी है, तो हमने शिफ्ट वाइज अपना दे रखा है। 3 शिफ्ट हमारी जो है वो पर 24 आवर्स के अंदर कंटिन्यू करती है। तो अब 24 घंटे यहाँ पे लगे हुए हैं और 24 घंटे यहाँ पे काम चल रहा है। किसी तरह की जान, किसी तरह के माल के नुकसान की अभी तक खबर? अभी तक ऐसा कुछ नहीं है और होप भी करते हैं ऐसा ना हो, पर देखिए ये है कि हर चीज़ के लिए मैनेजमेंट हम तैयार रखेंगे शुरू से, तो इसी चीज़ को रोका जा सकता है। ये तो एक तरीके से डिज़ास्टर जो है वो तो एक नेचुरल डिज़ास्टर है, और नेचर डिज़ास्टर में कम से कम जो हो जान माल का नुकसान, उसके लिए हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। Well, so this is the effort being done by the civil defense authorities. In fact, as we know, the DMs of different areas in Delhi, they are all on their toes. In fact, going post to pillar to actually take stock of the situation. Right now, the update is yes, it has started to rain once again here in the national capital. It's drizzling. The levels of water are increasing continuously, and though if we go by the IMD and in fact if we talk about the ground situation, the rains have stopped, but there is a continuous drizzle, but there is no such rains which we witnessed in national capital couple of days back. People living in the low-lying areas have been shifted to makeshift shelters like these, and in fact these shelters have been put up across many regions of the national capital. People from civil defense, people from police are working round the clock to actually make sure that no untoward situation arises, because there are kids also who are here, and in fact it's also very hard for the authorities to control these kids, because these kids run towards the river just to play, but they have to actually make sure that no untoward situation arises over here, and they have to also make sure one thing, that with the increasing waters of level, because if I can show you the water levels over here, the water has already touched upon a very crucial point. If the water increases from this very point, the areas on the other side will also be affected, and people will have to also take out their shanties from there. You can see there are still some shanties which are over there, but in case the water increases, those people also need to empty these spaces. So right now the life has been hit real bad in the national capital, and this is one of the ghats and one of the banks of Yamuna from where we are bringing you these visuals.